Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. जनकोपित्वं यन्नम्मयप्पने रात्रिं दिवसत्वं कालभैरवाय नमः जगदारिस्त्वं अन्तस्त्वं हे जगत्कारणं मम संघर्षत्वं पूर्णत्वं हे फलप्रदाता मम भूमिराकाशत्वं नित्यानन्दा मम सर्वस्वं नित्यानन्दा मम सर्वस्वम् सनातन धर्म के उधार सकल जग दुख दैत्य संहार तुझे जो टोके वो अपने मरण स्मरण कर लेना उनकी आचरण सहन करेंगे तू अपनी जन्म कारण पूरी कर ले तेरी शरण शरण में आए हम साथ तेरे हैं हम मम माता जनकोपित्वं मम माता जनकोपित्वं मम माता जनकोपित्वं नित्यानन्दा मम सर्वस्वं नित्यानन्दा मम सर्वस्वं नित्यानन्दा मम सर्वस्वं मम सर्वस्वं मम सर्वस्वम्
के लिए ये है चेतावनी, अब तू ना टिकेगा तो मिट्टी तो है आंधी। अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण। सदाशिव रूप की ये अवतरण, नित्यानंद की ये अवतरण। अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण। All of you can head to Kailasa's SPH Nityananda Paramashivam, the YouTube channel, and you can go to the being YouTube. All of you can head to Kailasa's SPH Nityananda Paramashivam, the YouTube channel, and you can go to the live video right on the YouTube channel. Don't forget to subscribe, and you all can post your prayers, your boons, blessings, requests, all of that as a comment right under the comment section of the YouTube channel. So you all can head to Kailasa's SPH Nityananda and post all your prayers and blessings requests as a comment under the live video. The next is WhatsApp. Please head to kailasa.org, and the moment you head to this, you will get a WhatsApp app prompt in the bottom of the screen. So scroll down, click on the prompt, and you will be led to the Kailasa community on WhatsApp. Join that and directly send your boons, prayer requests as message to Swamiji. The next is Twitter. Head to Kailasa's SPH Nityananda Paramashivam Twitter account, and on the topmost pinned tweet, post your reply as a comment and along with the hashtag Ask the Avatar, and post your prayers as a reply to that pinned tweet. The next is Instagram. Head to Kailasa's SPH Nityananda Instagram account, and you will be seeing the profile picture over there. Click on the profile picture where the live notification is given. Click on that live and post your prayer request as a comment in the live chat section. The last but not the least is Facebook. So all of you can head to SPH Nityananda Paramashivam, the official Facebook page, and you all can post all your prayers, blessings, requests, everything directly to Bhagavan Kalabhairava himself. And you all can put, don't forget to like the page and post all your prayers as a comment under the live video itself. And also you can take a moment to share this with your friends near and dear so that they can also ask the questions, their prayers and boons directly to Bhagavan Kalabhairava. Participants, every one of you that are sitting here, during this auspicious moment with Kalabhairava, you all can ask any prayers, any boons, any blessings requests that you all have. And for you to experience the complete benefit of the full program, to understand the software and science behind each of these initiations, please do attend the full day's program so that you can receive the maximum benefits from the program. ವೀರಭದ್ರನೇ ಕಾಲ ಭೈರವನಾಗಿ ನಿಂದಿರುವೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ಈ ಧರೆಯನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀ ಬಂದಿಹನೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ನೀ ಕೊಡುವವನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ
ईश्वरं जगदीश्वरं परमेश्वरं नन्दीश्वरं नित्येश्वरम् आनन्देश्वरम् ईश्वरं जगदीश्वरं परमेश्वरं नन्दीश्वरं नित्येश्वरम् आनन्देश्वरम् Advaita. I initiate all of you into Vishesha Diksha. I initiate all of you into the alchemy of Kalabhairavoham. All those today did the death process with me. I liberate all of you from all kinds of death and destruction. I give you all eternal life. As Maha Kalabhairava, I bless you all with eternal life. I initiate all of you into the power of Akashic reading. Sit now. See through all your three eyes into my three eyes. Whatever questions you want, post it now. You will see the answer in my third eye, in your third eye, through my third eye, in your third eye, in my third eye, through your third eye. You will see the Akashic records now. You will manifest the powers of Akashic records now. Whatever you see in my third eye, through your third eye, message that too. I'll correct, add if needed, and guide all of you into the power of Akashic reading. Om, Om, Om. ईश्वरं जगदीश्वरं परमेश्वरं नन्दीश्वरं नित्येश्वरम् आनन्देश्वरम् ईश्वरं जगदीश्वरं परमेश्वरं नन्दीश्वरं नित्येश्वरम् आनन्देश्वरं नित्येश्वरम् आनन्देश्वरं नित्येश्वरम् आनन्देश्वरम् என்னப்பனல்லவா என் தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா எங்கும் நிறைந்தவா
நிலையில்லாய் வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் மடமனம் நிலையில்லாய் வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் மடமனம் தடை தகர்த்து வெல்ல நித்யானந்தன் தந்த சூத்திரம் நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும் நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும் என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்மநிலை சஞ்சிதம் ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்மநிலை சஞ்சிதம் வாழும் ஜென்மத்தோடு கொண்டு வந்த பிராரப்தமா சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம் சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம் வீழும் மூன்று கர்மம் நித்யானந்தன் வழி சென்றிட வீழும் மூன்று கர்மம் நித்யானந்தன் வழி சென்றிட என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா போதும் நம்மை சாடுவர் விடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர் ஊடுயிராய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர் விடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர் ஆயுள் தாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் மீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர் ஆயுள் தாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் மீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர் என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா தந்தை தாயுமான போதும் திட்டமிட்ட சொந்தம்தான் கொண்ட வந்த மக்கள் யாவும் தீர்வில்லாத நோய்களாம் தந்தை தாயுமான போதும் திட்டமிட்ட சொந்தம்தான் கொண்ட வந்த மக்கள் யாவும் தீர்வில்லாத நோய்களாம் ஈடு காட்டில் இட்ட பின்பும் முக்தி தந்து ஏற்றிடும் ஈடிணை இல்லாத ஒரே சொந்தம் குரு நித்யனாம் ஈடிணை இல்லாத ஒரே சொந்தம் குரு நித்யனாம் என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஆசை கால நச்சம் வலியோடு குற்ற எண்ணமும் ஆசை கால நச்சம் வலியோடு குற்ற எண்ணமும் மாசு கொண்ட எண்ணங்கள் சல்காரமாய் வதைத்திடும் போதும் இந்த வாழ்வும் என்று ஜீவன் ஓய்வு தேடிடும் போதும் இந்த வாழ்வும் என்று ஜீவன் ஓய்வு தேடிடும் தேடும் ஓய்வு காட்டிடாத எண்ணம் மீண்டும் மோதிடும் தேடும் ஓய்வு காட்டிடாத எண்ணம் மீண்டும் மோதிடும் என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா
மாய்த்திரண்டு கொண்ட எண்ணம் மாய்த்திடும் காலம் செய்த கோலம் மாற்றி வேதனைகள் நீக்கிடும் கருணை வெள்ள மாய்த்திரண்டு கொண்ட எண்ணம் மாய்த்திடும் காலம் வரும் நேரம் காட்சி தந்த கரை சேர்த்திடும் சீலகத்தின் தந்த நித்யானந்த ஸ்மரண சூத்திரம் காலம் வரும் நேரம் காட்சி தந்த கரை சேர்த்திடும் சீலகத்தின் தந்த நித்யானந்த ஸ்மரண சூத்திரம் என்னப்பனல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா வாட்டும் வலியின் பிடியில் இந்த ஸ்தூல தேகம் தவித்திடும் சீற்றம் ஏற ஏற அச்ச எண்ணமாய் நிலை பெறும் வாட்டும் வலியின் பிடியில் இந்த ஸ்தூல தேகம் தவித்திடும் சீற்றம் ஏற ஏற அச்ச எண்ணமாய் நிலை பெறும் தாங்கும் ஞான சோளம் வலியின் வலிமை தன்னை வீழ்த்திடும் ஏங்கும் உயிர் நித்திய நருளில் ஸ்தூல தேகம் தாண்டிடும் ஏங்கும் உயிர் நித்திய நருளில் ஸ்தூல தேகம் தாண்டிடும் என்னப்பனல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா பிராணதேகம் காம மோகத்தீயினில் உழன்றதே பிராணதேகம் காம மோகத்தீயினில் உழன்றதே ஆசை கடலின் அலைகள் தன்னை கட்டுண்டே பின் மூழ்குதே காத்து கொள்ளும் நோக்கினோடு நித்தியன் பாதம் நாடுதே காத்து கொள்ளும் நோக்கினோடு நித்தியன் பாதம் நாடுதே நித்யானந்த ஸ்புரணம் தரும் யுக்தி தன்னை வேண்டுதே நித்யானந்த ஸ்புரணம் தரும் யுக்தி தன்னை வேண்டுதே என்னப்பனல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா கொண்ட ஆசை மோகம் யாவும் எண்ணமாக வாழ்ந்திடும் உள்ளே உள்ளி நாளெடுக்கும் நித்தியன் சொன்ன சூத்திரம் கொண்ட ஆசை மோகம் யாவும் எண்ணமாக வாழ்ந்திடும் உள்ளே உள்ளி நாளெடுக்கும் நித்தியன் சொன்ன சூத்திரம் பிள்ளை தமிழ் பேசும் தெய்வ ரூபம் கொண்ட நித்தியனும் சொன்ன மாத்திரத்தில் காண தேகம் கரை சேர்ந்ததே பிள்ளை தமிழ் பேசும் தெய்வ ரூபம் கொண்ட நித்தியனும் சொன்ன மாத்திரத்தில் காண தேகம் கரை சேர்ந்ததே என்னப்பனல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா குற்றமாய் உணர்வு கொள்ளும் எண்ண மனதை வாட்டிடும் சற்றும் தெளிவில்லாத நிலை தன்னை தானே காட்டிடும் குற்றமாய் உணர்வு கொள்ளும் எண்ண மனதை வாட்டிடும் சற்றும் தெளிவில்லாத நிலை தன்னை தானே காட்டிடும் சுற்றம் கொஞ்சம் சாற்றும் சுயமாக கொஞ்சம் வெற்றிடும் கற்ற வித்தை ஏதும் கை கடங்கிடாது போகிடும் கற்ற வித்தை ஏதும் கை கடங்கிடாது போகிடும் என்னப்பனல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா
தவறுணர்ந்து ஸ்படிகமாக மனம் தெளிந்த பெருநிலை, தவறுணர்ந்து ஸ்படிகமாக மனம் தெளிந்த பெருநிலை, குறை களைந்து நிலை உயர்ந்த சிகரம் எட்டும் ஓர் நிலை, சுமை குறைந்து மனசரீரம் கடந்து செல்லும் சீர்நிலை, சுமை குறைந்து மனசரீரம் கடந்து செல்லும் சீர்நிலை, தயபுரிந்து விமல நித்திய அருளுகின்ற மேல்நிலை, தயபுரிந்து விமல நித்திய அருளுகின்ற மேல்நிலை. என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா, என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா, எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா, பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா, எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா, பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா. சப்த சக்கரம் உள்ளடக்கும் தேகம் சூக்ஷ்மமாகுமே, காயம் கொள்ளும் வேதனை உணர்வு இங்கு ஓங்குமே, சப்த சக்கரம் உள்ளடக்கும் தேகம் சூக்ஷ்மமாகுமே, காயம் கொள்ளும் வேதனை உணர்வு இங்கு ஓங்குமே, ஓங்கும் யாவும் நீங்குகின்ற நித்யானந்தன் தத்துவம், சூக்ஷ்ம தேகம் தன்னை தாண்டும் விந்தை செய்து காட்டுமே, ஓங்கும் யாவும் நீங்குகின்ற நித்யானந்தன் தத்துவம், சூக்ஷ்ம தேகம் தன்னை தாண்டும் விந்தை செய்து காட்டுமே. என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா, என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா. நித்திரைக்குள் காணும் காரண சரீரமும் சூழும் சொப்பனத்தை மெய்யென்றெண்ணியே தவித்திடும், ஆழ்ந்த நித்திரைக்குள் காணும் காரண சரீரமும் சூழும் சொப்பனத்தை மெய்யென்றெண்ணியே தவித்திடும், மீளுகின்ற சூத்திரம் அருள் செய்யும் நித்யானந்தனால் காரண சரீரம் தன்னை பூர்ணமாய் கடக்கிறோம், காரண சரீரம் தன்னை பூர்ணமாய் கடக்கிறோம். என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா, என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா. அற்பமான வஸ்து மீது கொள்ளும் மோக எண்ணமே, அற்பமான வஸ்து மீது கொள்ளும் மோக எண்ணமே, ஸ்வர்க்கமாய் தெரிந்து ஆன்ம தேகம் தன்னை ஆளுமே, விற்பனை பொருட்கள் மீது கொள்ளுகின்ற பற்றலாம், விற்பனை பொருட்கள் மீது கொள்ளுகின்ற பற்றலாம், சொற்பமாய் சுகம் அளிக்கும் போகம் விளைவிக்குமே, சொற்பமாய் சுகம் அளிக்கும் போகம் விளைவிக்குமே. என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா, என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா. நித்யானந்தன் பாதம் தன்னை பற்றிட போக எண்ணம் மாற்றி ஞான தீயை கொஞ்சம் மூட்டுவான், பரமஹம்ச நித்யானந்தன் பாதம் தன்னை பற்றிட போக எண்ணம் மாற்றி ஞான தீயை கொஞ்சம் மூட்டுவான், மோகமாய் முளைத்த போகம் வேகம் கொண்ட தீயினால் ஏகமாய வான்ம தேகம் தாண்டி கரை சேருமே, மோகமாய் முளைத்த போகம் வேகம் கொண்ட தீயினால் ஏகமாய வான்ம தேகம் தாண்டி கரை சேருமே. என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா
தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா மனம் கசிந்து இதயம் தாண்டி இயம்புகின்ற நன்றியும் கணத்தில் கொண்ட காயம் நீக்கும் துயரில்லாமல் போக்கிடும் மனம் கசிந்து இதயம் தாண்டி இயம்புகின்ற நன்றியும் கணத்தில் கொண்ட காயம் நீக்கும் துயரில்லாமல் போக்கிடும் குணகுன்றாம் நித்யானந்தன் வடித்த நித்திய வாழ்வதால் மித்தியம் நீங்கி நிர்வாண உடல் தன்னை நாங்கள் கடக்கிறோம் மித்தியம் நீங்கி நிர்வாண உடல் தன்னை நாங்கள் கடக்கிறோம் என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா சத்திய வாழ்வு நித்திய வாழ்வு ஆனந்தமய வாழ்வுதான் சத்திய வாழ்வு நித்திய வாழ்வு ஆனந்தமய வாழ்வுதான் அருணை தந்த அமைதி புயல் நித்தியம் தந்த வாழ்வுதான் சம்ஸ்காரங்கள் நீங்கி நாங்கள் நித்தியம் தந்த வாழ்வினால் சம்ஸ்காரங்கள் நீங்கி நாங்கள் நித்தியம் தந்த வாழ்வினால் புதிய பிறவியாய் மலர்ந்து நித்யானந்தம் நெய்தினோம் புதிய பிறவியாய் மலர்ந்து நித்யானந்தம் நெய்தினோம் என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா
नित्यानंद नित्यानंद हरे नित्यानंद हरि ओम आनंद नित्यानंद हरि ओम आनंद नित्यानंद हरि ओम आनंद नित्यानंद हरि ओम आनंद नित्यानंद जय नित्यानंद शिव शंकर जय गिरिजाधीशा जय नित्यानंद शिव शंकर जय गिरिजाधीशा जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीशा जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीशा जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव 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 जटाजूट सिरवों पर सुरसरी धार चले जटाजूट सिरवों पर सुरसरी धार चले चंद्रकला मस्तक में मुंडन हार गले चंद्रकला मस्तक में मुंडन हार गले जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव 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 भाल विलोचन सुंदर कुंडल कानन में भाल विलोचन सुंदर कुंडल कानन में भूषण नाग विराजित बाघंबर तन में भूषण नाग विराजित बाघंबर तन में जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव 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 अंग विभूति मनोहर गौर शरीर लसे अंग विभूति मनोहर गौर शरीर लसे कर त्रिशूल परशुवर गिरिजा संग बसे कर त्रिशूल परशुवर गिरिजा संग बसे जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव 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 गिर कैलाश कर शुभ सिंहासन राजे गिर कैलाश कर शुभ सिंहासन राजे नंदी गण गणनायक शोभित दरवाजे नंदी गण गणनायक शोभित दरवाजे जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव 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 ऋषि मुनि सुरगण मिलकर महिमा गान करे ऋषि मुनि सुरगण मिलकर महिमा गान करे योगी जन हृदय में निश दिन ध्यान करे योगी जन हृदय में निश दिन ध्यान करे जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव
सुख करता, जन्म मरण भव बंधन हारण सुख करता। जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव। पूर्ण ब्रह्म निरंजन निर्गुण गुण राशि, पूर्ण ब्रह्म निरंजन निर्गुण गुण राशि, सकल जगत प्रतिपालन कारण अविनाशी, सकल जगत प्रतिपालन कारण अविनाशी। जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव। जो जन शिव की महिमा गायन नित्य करे, जो जन शिव की महिमा गायन नित्य करे, भक्त वही सगज में सो भव सिंधु तरे, भक्त वही सगज में सो भव सिंधु तरे। जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव। जय नित्यानंद शिव शंकर जय गिरिजाधीशा, जय नित्यानंद शिव शंकर जय गिरिजाधीशा, जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीशा, जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीशा। जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव, जय जय देव महादेव जय नित्यानंद देव। पदे नित्य भाग्य समृद्धि मुबाजय में, भाग्य समृद्धि मुबाजय में। नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम्, नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम्। शिवतमनन्द पदान्वित रामसु दीपित सत्कविभत्यमीतम्, शिवतमनन्द पदान्वित राम सुदीपित सत्कविभत्यमीतम्। नटनपदेरदि दुष्टिकरं बहु भाग्यविमीक्षित सिद्धिकरम्, नटनपदेरदि तुष्टिकरं बहु भाग्यविमीक्षित सिद्धिकरम्। पडदिषु नो दिश भक्तियुतो यदि भाग्य समृद्धि मदोलपदे, पठदिषु नो दिश भक्तियुतो यदि भाग्य समृद्धि मदोलपदे। जय जय हे नित्यानंद पते नित्य, जय जय हे नित्यानंद पते नित्य, भाग्य समृद्धि मुबार्जय में, भाग्य समृद्धि मुबार्जय में। नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम्,
नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् शिवतमनन्द पदान्वित रामसु दीहित सत्कविभ काञ्चन विग्रह कामविनिग्रह कान्ददनु कनक सभागत काञ्चन विग्रह कामविनिग्रह कान्ददनु कलिकलितागिल पापमलाभः कृत्तिसमावृत देहविभो कलिकलितागिल कामविनिग्रह कान्ददनु नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् कनक सभागत काञ्चन विग्रह कामविनिग्रह कान्ददनु कनक सभागत काञ्चन विग्रह कामविनिग्रह कान्ददनु कलिकलितागिल पापमलाभः कृत्तिसमावृत देहविभो कलिकलितागिल पापमलाभः कृत्तिसमावृत देहविभो कुवलयसन्निभ रत्नविनिर्मित त्वयक्रीट सुभाष्टधनो कुवलयसन्निभ रत्नविनिर्मित त्वयक्रीट सुभाष्टधनो जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य भाग्य समृद्धि मुभार्जय मे भाग्य समृद्धि मुभार्जय मे नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् करकलितामल सूलभयङ्कर कालनिरासक पादविभो करकलितामल सूलभयङ्कर कालनिरासक पादविभो पदकमलागत भक्तजनावन भक्तसुकङ्कण देव विभो पदकमलागत भक्तजनावन भक्तसुकङ्कण देव विभो शिवनिलयागत भूतिविभूषित दीक्षित पूजित पूज्यदनो शिवनिलयागत भूतिविभूषित दीक्षित पूजित पूज्यदनो जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य भाग्य समृद्धि मुभार्जय मे भाग्य समृद्धि मुभार्जय मे नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् हर नित्य शङ्कर भक्तहृदम्बर वासचिदम्बर नाद विभो हर नित्य शङ्कर भक्तहृदम्बर वासचिदम्बर नाद विभो दुरित निरन्दर
दुष्टभयङ्कर दर्शनशङ्कर दिव्यदनो दुरितनिरन्तर दुष्टभयङ्कर दर्शनशङ्कर दिव्यदनो दशसदकन्दर शेषहृदन्तर शङ्कर रक्षित वार्तगुरो दशसदकन्दर शेषहृदन्तर शङ्कर रक्षित वार्तगुरो जय जय हे नित्यानन्दपदे नित्य जय जय हे नित्यानन्दपदे नित्य भाग्य समृद्धि मुभार्जय मे भाग्य समृद्धि मुभार्जय मे नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् शिव शिव शङ्कर साम्ब पुरन्दर पूजित सुन्दर मन्त्रनिधे शिव शिव शङ्कर साम्ब पुरन्दर पूजित सुन्दर मन्त्रनिधे मुरहर सन्नदि मंगल दर्शन मंत्र रहस्य चिदात्मदनो मुरहर सन्नदि मंगल दर्शन मंत्र रहस्य चिदात्मदनो पुरहर संहर पापमपा गुरु भीतिमरादि कृतामकेलां पुरहर संहर पापमपा गुरु भीतिमरादि कृतामकेलां जय जय हे नित्यानन्दपदे नित्य जय जय हे नित्यानन्दपदे नित्य भाग्य समृद्धि मुभार्जय मे भाग्य समृद्धि मुभार्जय मे नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् भुजगविभूषण भूतिविलेबन बालविलोचन लोकदनु भुजगविभूषण भूतिविलेबन बालविलोचन लोकदनु वृषडसुवाहन काङ्गवयोदर सुन्दर नर्दन लोकदनु वृषडसुवाहन काङ्गपयोधर सुन्दर नर्दन लोकदनु सुददनदायक सौख्यविदायक साधुदयाकर सत्वदनो सुददनदायक सौख्यविदायक साधुदयाकर सत्वदनो जय जय हे नित्यानन्दपदे नित्य जय जय हे नित्यानन्दपदे नित्य भाग्य समृद्धि मुभार्जय मे भाग्य समृद्धि मुभार्जय मे नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् सकलहृतन्दर चन्द्रकलाधर मन्त्रमराकृत भूततदे सकलहृतन्दर चन्द्रकलाधर मन्त्रमराकृत भूततदे चरणसमार्चन दिव्यगृहागत देववरार्पित भाग्यतदे चरणसमार्चन दिव्यगृहागत देववरार्पित भाग्यतदे
यक्षसुरासुर भूतकृतस्तुते दुष्टमदे विधिहरिनारद यक्षसुरासुर भूतकृतस्तुते दुष्टमदे जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य भाग्य समृद्धि मुबार जय में भाग्य समृद्धि मुबार जय में नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् गिरितनयार्पित चन्दन संबक कुङ्कुम पङ्कज कन्ददनु गिरितनयार्पित चन्दन संबक कुङ्कुम पङ्कज कन्ददनु धिमि धिमि दिन्दिमि वादननूपुर पादतलोदित नृतगुरो धिमि धिमि दिन्दिमि वादननूपुर पादतलोदित नृतगुरो रविकिरणास्त मया गत दैवत दृष्टसुनर्दन दर्शदनो रविकिरणास्त मया गत दैवत दृष्टसुनर्दन दर्शदनो जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य भाग्य समृद्धि मुबार जय में भाग्य समृद्धि मुबार जय नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् हिमगिरिजाकर शङ्कर हणोदित मोदेषु पूर्ण सुवर्णधनो हिमगिरिजाकर शङ्कर हणोदित मोदेषु पूर्ण सुवर्णधनो गुहगणनायक गीतगुणार्वण गोपुरसूचित विश्वधनो गुहगणनायक गीतगुणार्वण गोपुरसूचित विश्वधनो गुणगणभूषण गोपतिलोचन गोपकुलाधिप मित्रमने गुणगणभूषण गोपतिलोचन गोपकुलाधिप मित्रमने जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य भाग्य समृद्धि मुबार जय में भाग्य समृद्धि मुबार जय में नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् डमरुकदारिण मिन्दुकलादर मिन्द्रपद प्रदमग्निकरम् डमरुकदारिण मिन्दुकलाधर इन्द्रपद प्रदमग्निकरम् गुहजननीयुत मातमृगोत्तम अर्तिजनाखिल रोगहरम् गुहजननीयुत मातमृगोत्तम मर्तिजनाखिल रोगहरम् जपजमानस विस्मृतिकारक रोगतनूपरिततपदम् जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य जय जय हे नित्यानन्दपते नित्य
भाग्य समृद्धि मुबार्जय मे भाग्य समृद्धि मुबार्जय मे नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नत जन शङ्कर पिङ्गजटाधर कण्डल सत्कर गौरगनो नत जन शङ्कर पिङ्गजटाधर कण्डल सत्कर गौरगनो वरद पतञ्जलि सत्कृति सन्नुत मृगचरणार्पित पुष्पतदे वरद पतञ्जलि सत्कृति सन्नुत मृगचरणार्पित पुष्पतदे डमरुकवादन बोधित सर्व कला किल वेद रहस्यदनो डमरुकवादन बोधित सर्व कला किल वेद रहस्यदनो जय जय हे नित्यानन्द पदे नित्य जय जय हे नित्यानन्द पदे नित्य भाग्य समृद्धि मुबार्जय मे भाग्य समृद्धि मुबार्जय मे नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् शिवतमनन्द पदान्वित रामसु दीहित सत्कविभद्यमीतम् शिवतमनन्द पदान्वित राम सुदीहित सत्कविभद्यमीतम् नटनपदेरदि दुष्टिकरं बहु भाग्यविमीक्षित सिद्धिकरं नटनपदेरदि दुष्टिकरं बहु भाग्यविमीक्षित सिद्धिकरं पठदिषु नो दिश भक्तियुतो यदि भाग्यसमृद्धि मदोलपदे पठदिषु नो दिश भक्तियुतो यदि भाग्यसमृद्धि मदोलपदे जय जय हे नित्यानन्द पदे नित्य जय जय हे नित्यानन्द पदे नित्य भाग्य समृद्धि मुबार्जय मे भाग्य समृद्धि मुबार्जय मे नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् शिवतमनन्द पदान्वित रामसु दीहित सत्कविभद्यमितम् शिवतमनन्द पदान्वित रामसु दीहित सत्कविभद्यमितम् नटनपदेरति तुष्टिकरं बहु भाग्यविमीक्षित सिद्धिकरं नटनपदेरति तुष्टिकरं बहु भाग्यविमीक्षित सिद्धिकरं पठदिषु नो दिश भक्तियुतो यदि भाग्यसमृद्धि मदोलपदे पठदिषु नो दिश भक्तियुतो यदि भाग्यसमृद्धि मदोलपदे जय जय हे नित्यानन्द पदे नित्य जय जय हे नित्यानन्द पदे नित्य भाग्य समृद्धि मुबार्जय मे भाग्य समृद्धि मुबार्जय मे
नित्यपुरीश्वर आनन्देश्वर हे परमेश्वर पालय माम् 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 नादलोल नित्यानन्द हरे नागाभरण नित्य हरे 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 नन्दिवाहना
Tao Wang, I accepted your Pada Puja and your gratitude. I'll heal your broken right hand right now. You will be completely healed. Tao Wang. My blessings, you will be healed completely. And Maha Kalakala Yogini is your spiritual name. Maha Kalakala Yogini. And my blessings for your enlightenment. The Guru walk for you is do yoga every day. Every day do yoga, that's enough. I'll take care. Blessings for your father Wang Guangji and mother Xi Ming Zhu. My blessings for you and for them. Tatast. सारे विश्व का वो है दाता नित्यानंद भगवान। नित्या हमारे मन मंदिर में नित्या हमारे प्यार। नित्या हमारे मन मंदिर में
नित्यानन्द धन्वन्तरये नित्यानन्द दीनोद्धरण नित्यानन्द दिव्यस्वरूप नित्यानन्द ज्ञानप्रदाता नित्यानन्द जीवन्मुक्तिदाता नित्यानन्द देवादिदेव नित्यानन्द शरणु शरणु श्री नित्यानन्द ध्यानस्वरूप नित्यानन्द धन्वन्तरये नित्यानन्द दीनोद्धरण नित्यानन्द दिव्यस्वरूप नित्यानन्द ज्ञानप्रदाता नित्यानन्द जीवन्मुक्तिदाता नित्यानन्द देवादिदेव नित्यानन्द शरणु शरणु श्री नित्यानन्द धूलिदर्शनं दुःखनाशनं 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 पाददर्शनं पापनाशनं 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 ललाटदर्शनं दरिद्रनाशनं 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 आनन्ददर्शनं कैलाससाधनं 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 धूलिदर्शनं दुःखनाशनं पाददर्शनं पापनाशनं ललाटदर्शनं दरिद्रनाशनं आनन्ददर्शनं श्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्ता ध्वजोच्छेदनपूर्वक श्रीमद्वृषभध्वजस्थापक शैव समयकर्त्रे सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिक स्वामि वागीश सुन्दर माणिक्यवाचक स्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्ध स्वामि पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तः साक्षात् श्रीपरमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्मशासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत
कपिलमहागुरुपुनरुद्धृत महानिर्वाणिपीठ अष्टोत्तरसहस्र श्रीमहामण्डलेश्वर साक्षात् श्रीपरमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्तगणनायक श्रीमहागणपतिसमारम्भ अनवच्छिन्नपीठाधीश्वर गुरुपरम्परा प्राप्त अटलपीठ अष्टोत्तरसहस्र श्री अटलपीठाधीश्वर धर्ममुक्तिस्वर्गपुरस्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरुमहासन्निधान कैलासपरम्परागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरो श्रीकैलासपुनरुद्धारक श्रीकैलासपरमाचार्य श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य सच्चिदानन्दप्रणवस्वरूप श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवच्छ्रीनित्यानन्द परमशिव श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञानवितरणेन विजयी भव जय जय। Now, let's all enter into the power manifestation session. And today, Swamiji has blessed all of us to manifest the power of Akashic reading, which means being able to see the answers appearing, see into Swamiji's third eye through all our three eyes, able to get all the answers that we want. This is such an amazing power that Swamiji has blessed with. Right after this initiation, now that Swamiji has blessed us, just sit now. About 5 to 10 minutes. Sit
and manifest intensely. With this one blessing, Swamiji has literally showered us with all the best things. And most importantly, before we enter into the power manifestation, tomorrow on the occasion of Krishna Janmashtami, we have the darshan at 2 p.m. New York time, 2 p.m. Eastern Standard Time. Do not miss. Please be there. The darshan is going to be at 2 p.m. Eastern Standard Time tomorrow. So I request all the participants, every one of you, to please be there. Now, let us enter into manifesting the power of Akashic readings. See, it's very simple. Like Swamiji said, all of you will be able to see the answers appearing on Swamiji's form. So if you all have the Atma Murti, I request all of you to please put the Atma Murti in front and apply the Aushadha. And please have the Aushadha applied, and you will be able to see it on the Atma Murti. Actually, the golden letters will appear on the Atma Murti itself, and you will be able to see the answers beautifully opening up there. Okay, so if you all have the Atmamurti, please put it on the Atmamurti. Apply the Jnananjana on Swamiji's third eye and just apply like how you would see on the mirror or the granite slab. Here in Atmamurti, you will see it much, much more clearly and much, much more easily as well. So wait for the golden letters to appear on Swamiji's form. You will actually be able to see like letter by letter, like that fire gold kind of a color. You will be able to see clearly the letter by letter it appearing. So each of you can just sit, connect to Swamiji intensely and see. Swamiji will reveal to you the answers for all the questions that you have. Shall we all get started? I request all the participants, every one of you, to sit straight. In this round, what we are going to be manifesting is you're going to be able to connect and identify the details about anyone, any person that you want. Like which school they studied in, what was their name, what was their school's name, any details about a person you will be able to identify just by knowing their name. Like for example, you all can connect to a partner. Your partner can say, okay, scan my friend Aisha. So you will be able to identify who that person is, their appearance and their preferences, their school details. All of this you will be able to see. And make sure that first you're all getting the consent of the person, and you're going to be scanning. Like for example, let's say your partner can say, okay, which school did I study in? You can actually scan and identify the details of what exactly happened, like which school they studied in, what was the name of the school, everything about that person. Understanding? Can I request every one of you here to connect with a partner, please? Come on, all the participants. Vedatma Aya, Paul Rajaya, Ashutosh Vishwasaya, Shane Dennis. I request you all to just connect amongst each other itself. I see all the participants are sitting here. You all can just put in the chat, connect amongst yourself, like Everardo Alfaro Aya and Manoj Talvaraya, Zhang and Shane Dennis Aya. Each of you can just connect with each other. Could you all just put in the chat and connect, please? Okay, so you can ask for a partner in the chat, right? In the chat, and you all can connect with your partner. Same way, Zach Medaya, Ashutosh Vishwasaya, Adamya Sharma, I request every one of you to start and manifest as well. This is a very, very super cool power. See, your partner can ask you any question they want. You just need to do only one thing. Keep an Atma Murti in front. Just connect to Swamiji. Keep looking at the Atma Murti through all your three eyes till the answer appears in the Atma Murti itself for you. Okay, great. I see Ashutosh Vishwasaya and Zach Medaya manifesting, and Satyojata Shivam. And I'm also seeing Surya Kumaraya, Nityanandam. Surya Kumaraya, you can also manifest. Edgar Aya, Hui Long Aya, Pankaj Kankaraya, come on, you should also manifest. Every one of you, please connect to a partner and manifest.
Okay, great. Ma Soumya Prabhala and Ma Prematavasi are manifesting. How about the others? Come on. Everyone has to connect. Today, all of you have to manifest. Understand? Don't take power manifestation lightly, especially after Kalabhairava Darshan. He has blessed you. If you start practicing this power, anytime you're stuck in any problem in life, when you look at the Atmamurti, you will get the solution on the Atmamurti itself. Swamiji will himself speak to you. He will reveal the answers to you. Ma Sharmi Patel, Ma Hui Wong. Every one of you, please connect. Put on the chat. Ma Parameshwari. Okay, Ma Parameshwari. I see in this chat actively participants are connecting. See, Ma Sadashivaya, you should take first specific questions. See, do not give like that. I see a question. See, you just start with something verifiable. Like, for example, you can say, let's say, what school did you study in? Right? Something like that. Any details about you which has a very definitive answer. So we'll start with that. Like, for example, you can ask someone, how many siblings do I have? Or the name of a person, you can ask them to describe how your mom looks. Anything of your choice like that. So keep the question that way, Ma. So you will know exactly what to identify. Okay, Ma Krista Hetman and Ma Parameshwari. Come on, every one of you. Ma Pamela Singh. Connect. You will be able to chant the Mahavakya and see all the answers appearing. Whatever appears, share it with them and you all can verify it. Is there anyone who does not have a partner? Who's not able to identify a partner yet? And it should not be just one. Repeat the questions, like means like multiple questions. Ma Shante Fields and Ma Parameshwari, you both should be like every 2 minutes once. Each of you should give a next question to each other. So don't just do one round. Listen very carefully. Do multiple rounds. Ask different questions. The name of your school teacher, or the name of the how your mom looks, or how your dad looks, something like that. So keep asking different questions and verify. Only then you will gain more confidence in the experience of manifestation. Okay, great. I see many of you manifesting. Let's start. परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम्
Shivoham. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om Nityananda
नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम्
Nityananda Paramashivoham. Om 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 Nityananda You all can please relax. Please relax. I request all of you to post how many of you have started manifesting? How many of you have started having this breakthrough? Even if you're able to identify one or two details, that's enough. That itself is manifestation. From there, you will be able to start manifesting higher and higher levels. Now, we're all going to be entering into a very, very important session next, where we're going to be understanding how the going beyond death, how Swamiji himself had manifested in his own life. It's a very, very beautiful session. Let's all enjoy. Swamiji is going to be saying 5 different stories from Swamiji's own life for us. Let's all listen to this revelations. The first death I faced in my life, my father's elder brother's son, elder son, he died. He fell into the village well. He went for a vacation to one of his relatives' house. You all know in Indian villages, if the school holiday, immediately we'll pack and go to some aunt's house, uncle's house, 2-3 days run around there and come back. It's the only way of vacation. He went to a vacation nearby village. My family is a tight-knit family. They don't marry outside not even outside community, not even outside the family. They'll marry inside. If you pick up one person, he will have 10 way of relationship with other persons. So, this boy used to be dumb and deaf little. So, he can't speak fluently. He went for vacation and the villages will have a wall, the well without wall. So, this guy was running around and fell into that well and died, unfortunately. So when his body was brought, first time, it's reality for me, somebody whom you saw till few days before will not be there with you anymore. I can say in a way he was my first devotee. He used to have a great devotion for me. He is the one who will bring water, flowers, everything for my puja. He had a tremendous love and respect for me. Even though I am younger to him,
He will bring all the things necessary for my puja, help me in puja, assist me. Very religious person. And I used to give him a lot of attention. I am the only person who can play with him or who can entertain him. You see, in all other play, you need to talk, you need to interact, you need to be equal. But my play is sitting with the deities and playing, doing puja. There you don't need to talk much. And only I will be able to accommodate him in my play. Nobody can accommodate. So I used to have a tremendous love for me, and my first assistant, maybe I can say, and a great devotee. Suddenly, he is not there. Apart from my practical problems of who will assist me in my puja and all that, who will fetch me water, who will get me flowers, who will get me sandal paste, then with that only you can do puja. I was thinking, who will do all this work? Such a big shock. The basic understanding that death is inevitable got drilled in me. Actually, I can say, this awakened the sense that I have to be dependent only on me, only on my body and mind for anything I want to do. Society will not be a permanent help. That reality was completely experienced by me. I can say, surely it has awakened a very deep, next level strands of DNA in my body. So, independence. I can say, this was one strong shift in my body. My body has started becoming yogic body. See, my whole idea of depending on somebody was lost. I have to be completely dependent only on the 6 feet frame for anything I have to do. The second death was my grandmother's, my grandfather's elder brother's wife. She lived the ripe age of more than 103. And till the end, very healthy. The funny part in this is, please understand, the most funny part in this is, all these deaths I am describing happened like a process, one by one by one. Now if I look back, it was such a great preparation. How the cosmos was making incarnation. Actually, I myself enjoy that story. I am writing an autobiography. I do not know whether somebody else is enjoying or not, going to enjoy or not. I myself intensely enjoying. Oh God, what a play! What a leela happening. It's such powerful truth, such powerful incidents, played so beautifully, such a coordinated way. The next death, my grandmother's death, that has given me the lesson of society cannot be trusted, and it is not a structure as it is believed by you. Father is not a father, mother is not a mother, uncle is not uncle, aunt is not aunt. Things can be completely different. See, first time I realized people can talk one thing and think something else. I never understood you can think something and talk something else. First time I realized during my grandmother's death,
how people behaved, I saw. I just remembered, oh God, this lady to whom she's not giving, but that guy is giving so much. That's one understanding. Second, when the death was declared, I saw my family people, they were all sitting, and they were all very normal, happy, actually waiting for her to die, because she had a lot of money, jewelries. Those days, that silver coin, in India, we had a habit of silver coin, pre-independence, silver coins. A lot of those coins she had under her bed in a trunk box. So now all these fellows will get a share. But she herself did not have any kids, but her brothers and their kids, many, and finally each one will get one, maybe little. But they were all waiting for their share. They were waiting for her death. The moment she died, I saw these fellows were very cool. They did not cry immediately. They went to their rooms. Each one will be given one own room, usually in the joint families. They all went to their rooms and changed the dress, put on very simple clothes, removed all the costly jewels and put on simple jewels, came and assembled in the hall, center hall, as if like a scene. And the first one say, start, oh, they started crying. It's almost like a Divya Shariri. The moment I say, they start jumping. First time, my idea about society crumbled down. Because one of my uncle was forcing me. I cry. I said, no, I don't feel like crying. He said, no, everybody is coming, cry. I said, no, I won't. Then he slapped me. I just held his hand and said, if you touch me once more, I'll tell everybody what all you guys did in the room. Fighting for our jewels. Then my father intervened and said, this fellow will really tell. Why are you playing with him? Why are you beating him at this moment? He will really sit outside and tell everybody before they come inside. Then they understood the danger. They put me in a room and locked me. They locked that room. I was inside that room. I can say, I cried for maybe half an hour or 1 hour. Then when I just fell, it was a big opening, a kind of a breaking. My whole being settled. My respect for society has disappeared. I was living near a place called Varanasi, one of the sacred pilgrimage center of Hinduism, place called Ghazipur. I was serving a sadhu, old monk, who was very sick. It's a small town, a small hospital, a small ward, some 2-3 steel cot and bed and few old steth and BP machine and a green screen. You can visualize an Indian village hospital, you can imagine. This sadhu whom I was taking care, next bed, the patient was about to die. This old doctor and that old nurse, both of them are trying to revive him, support him. The patient who was dying must be less than 50. So they were trying to help him. But I could see he's already started dying. Please listen. First time I saw death in 4 dimension. I'll describe as much as I can. You have 7 parts in you. Your body with flesh, blood. This is the first part. Second is your breathing. Your
breathing, that's the second part. Third, you are thinking. Fourth, you are feeling. Fifth, the area you experience during deep sleep, from where you are experiencing feeling. Understand? First, this flesh blood. Second, breathing, prana. Third, thinking, mind. Fourth, feeling, emotions. Fifth, the deep sleep state, which is called causal layer, from which all this feeling, thinking, everything happens. Sixth, the soul, your individual soul, consciousness. Seventh is the cosmic soul, Paramatma, Nirvana, enlightenment. All these seven put together is you. Please listen. If the cosmic soul is an ocean, your private beach is individual soul. Clear? If cosmic soul is ocean, your private beach is individual soul. So you can't say individual soul does not belong to cosmic soul. Your private beach is also ocean. You can't say you are having ocean. It's your private beach. How many of you understand? So all these seven put together is you. I could see this guy moving from one to another. First, in his body, the heavy pain chemicals are released. How many of you experienced scorpion bite in your life? Scorpion bite. Scorpion bite. Any? Usually, if the scorpion bites in that area, for you not to feel the pain, your body will release the painkillers, anti-pain chemicals. That will only make that whole area swell. Any doctors here? Your body has a natural anesthetic methods. Do you know that? If the pain goes beyond certain limit, your body itself will release automatically painkiller inside, the anesthesia, and you will fall into unconscious state, coma. First, exactly that is what has happened to that guy. There was so much of pain in the body, as if his skin is being peeled. So much painkiller was released inside the system, he fell into coma. Automatically. The moment he fell into coma, all his patterns become alive and vital. It is like 25 kids are in the house and parents are not there. What will happen to that house? 25 wild kids and parents are not there in the house. That is the way, if your consciousness is missing, and that is the way your patterns behave. Even while the kids behave, your consciousness is like a father. Your patterns are all kids. When your consciousness is not there, when you become unconscious, coma stage, patterns just make ruckus. I could see his unconscious soul was kicked like a football. Imagine in this house, in this room, one football is there and 25 football players are there. If all of them kick at that ball, what happens? So all his desire patterns are kicking at him. The ball is flying from one corner to another corner. His soul, unconscious soul, which is in coma. All your patterns have a deep vengeance on your soul, your consciousness.
Please listen. Please listen. I could see in that person all the desire patterns are kicking him, asking, I told you, fellow, I want to live, I want to live, I want to live. You did not fulfill me, complete me. Desire is nothing but the commitments you gave it to you. Understand? The commitments you gave it to you, all stands there and questions you. Why you did not fulfill me? Honor me. Then somehow that soul jumps to the next level. Next level, all the guilt, inauthenticity comes up. And say, I told you we should have lived like that, like that. Why did you do this, do this? The first, the lack of integrity patterns are kicking you. Desire. Next, inauthenticity. The guilt patterns. I can say this is the space when the individual soul feels hell. So individual soul experiences hell. Getting it? Hell is not actually separate. Geographical, it is psychological. And then soul moves to next. All the pains you experience in your life, your irresponsibility patterns, that comes up and shatters, beats the soul which is already unconscious. Then it finally goes and falls into that deep sleep layer. From there, it doesn't move further. It immediately goes and takes next body. In that unconsciousness itself. So that is why you do not know what kind of house, parents you are choosing. You just close your eyes and walk. After entering only you open your eyes and see, oh God, I thought I am coming to the cinema theater. Now only I understood. I came to the garbage tank. Oh, you are a garbage can. I thought you are a Pizza Hut. After you enter into the garbage tank, garbage lorry, you say, I thought I am in the Pizza Hut. But now you cannot change. You have taken already one more body. Exactly this is what happens while you die. Please understand, I am giving you the visual description of what happens. You do not touch your individual soul or cosmic soul, your individuality, without even touching your individual soul or the cosmic soul consciously, takes another one birth. It is like you are dreaming, without even waking up, you fall asleep and again dream. Again fall asleep, again dream. You never come to waking state. How many of you understand? That's the way body is assumed. This is the third death I saw in my life. In Bangalore, I was giving a satsang on Ashtavakra Mahagita. I received the information my father passed away, massive cardiac arrest, and he passed away. My mother was in the satsang. So I continued the satsang, and after the satsang, after darshan, when I got into my car, called the mother and made her sit in my car, and she's a village lady. First time in her life, she is leaving my father alone and coming and staying somewhere outside in her 27 years of marriage. And he passed away. I don't know how many of you will believe. I lived there
with them 17 years, I never saw them even once arguing with each other. I'm sure they would have had difference of opinion, arguments, because they are human beings. Even Mahadeva and Sati had argument. What about, come on, even he had marital problems. So, no, I'm not saying they would not have had, but at least they managed such a way that never in front of us, never in front of kids, I've seen them raising their voice or arguing. Very happily they lived. So she's sitting next to me and I'll tell you exactly, just few words I told her. First word I said, Ma, I think father is not feeling well, he is in serious condition. She just looked into my eyes. Next statement I said, I think he is dead. She looked into my eyes. Third statement I said, please understand, I'm talking to my mother inside the car where nobody is there. It's a complete private conversation. I told her, you know, I can bring him back. Do you want? That's all I asked. You know, I can bring him back. Do you want? The statement she made, I tell you with all my integrity, Swamiji, that is between you and his soul. I will not interfere. That is between. Just now she received the news and she knows I can bring him back. She's a village lady. She did not have time to think and answer. Spontaneous, straight answer. I know how dependent she is on him. She said, in Tamil she said, Swami, அது நீங்களும் அவரும் முடிவு பண்ணணும், நான் தலையிடக்கூடாது சாமி. I just hugged her and said, that's why I chose you as my mother. There are many moments you are proud of me, now I am proud of you, I told her. There are many moments you are proud of me, having son like whatever. I said, now I am proud of you. I told her in Tamil. பல நேரத்தில் நீ பெருமைப்பட்டிருப்ப, இப்போ எனக்கு பெருமையா இருக்குமா? Understand with mother, in the moment where my father is dead, you can't expect me to lie or give a false hope. All of you understand? With that integrity I am talking to all of you now. The integrity with which I was talking to my mother when my father is dead. I told her, all right, I'll relate with him and then decide. Anyhow, he wanted to rest, he wanted to relax. He said, what more? Just. Fifth death is in Bangalore. See, after my own death experience, I came to Central India. In the Central India, I realized my incarnationhood. In 2000, then 2001, I came and settled down in Tamil Nadu. And 2002, I came to Karnataka. 3, I started this Sangha organization. In 2002 end, or I can say 2003 beginning, I think. In Bangalore, I was attending a patient, one of our devotee. To heal, I went to hospital. In the hospital, the next bed patient was dying. That time I watched
The patient was dying without any pain, like a knife in the butter. He was very smoothly leaving the body and disappeared into the ocean, enlightened. I was shocked when I investigated. I did not see any special reason why this guy became enlightened, because he was not a meditator, he was not a religious guy, no guru. I was wondering how come he became enlightened. When I contemplated, I realized he was dying in the presence of an incarnation. So naturally, my presence has contributed for his peaceful passing away. Then I meditated, how can I give this help to people? If there is any way I can help people to have this peaceful death, an enlightenment while you leave the body, that will be the greatest service. For my contemplation and meditation, the answer I received is the program you are going to do for next 3 days. The process of death, going through all your patterns and experiencing the ultimate restful awareness. Listen. I'm going to read out the Akashic records. Sit sincerely, intensely. I can directly download the whole records into your being, and it can manifest in you directly as realization. Listen. Kala means the dimension of the universe in which the vibration component, the Parashakti component of Paramashiva manifesting. Understand? When Paramashiva decided to become many and celebrate himself, his Parashakti, decision to become many, started operating on the dimension called Kala. I'll give you an example. Just zoom out. See the space where big bangs and black holes happening simultaneously, billions of planets, suns, moons, stars moving, taking birth, living for millions of years and disappearing simultaneously. That space is Kala. Meditate on that space. In Kala, life comes, lives for billion years and relaxes simultaneously. Billion year, beginning and the end exists simultaneously. Without any gap, billions of years exist simultaneously. That dimension is Kala. Understand?
understanding about Kala, meditating on Kala, cognizing Kala will liberate you from death now. You will understand there is no death. Kalabhairava gives you eternal life when you decide to be life positive. Extreme love is life positive, constantly contributing, sharing yourself, extremely loving is the smell of life positivity. That is the source of Kalabhairava. That is Kalabhairava. Listen. In the world, there are only two types of people. One, continuous contributors. People who go on contributing, loving, caring, enriching. From the time I remember me, the only job I do is continuously enriching each one of your consciousness, adding the best to your best possibility. Understand? You have multi-dimensions: body dimension, psychology dimension, physiology dimension, mind dimension, emotion dimension. Your